तो दोस्तों हमारी वाटर पंप बनके तैयार हो गई है। ये बहुत ही अच्छी तरीके से काम कर रही है। इसको आप घर पे भी बना सकते हैं। तो इसको बनाने के लिए आप हमारी वीडियो को लास्ट तक जरूर देखें। इसमें स्टेप बाय स्टेप आपको बताया गया है। तो सबसे पहले हम ले लेते हैं यहाँ पे बोतल की ढक्कन को, जो कि हमारी प्लास्टिक की होनी चाहिए। और उसके बाद हम ले लेते हैं यहाँ पे एक स्विच को। और अगला उपकरण हम ले लेते हैं यहाँ पे एक 9 वोल्ट बैटरी की। इस बैटरी के बाद हम एक ले लेते हैं यहाँ पे एक कनेक्टर पिन के द्वारा हम इसको जोड़ देंगे बैटरी को। और एक मोटर की भी आवश्यकता पड़ेगी इसमें, इसको बनाने के लिए। मोटर के बाद हम एक ले लेते हैं खाली बॉक्स, जिसमें पानी भरने के लिए। और 2 पेन की कैप से जो है हम पाइप बनाएंगे यहाँ पे। दोस्तों जो इस चैनल पे नए हो, चैनल को सब्सक्राइब कर लें और नोटिफिकेशन बेल को ऑन कर लें, ताकि जो भी वीडियो तब चैनल पे अपलोड हो आपको मिलती रहे। तो यहाँ पे इसको बनाने के लिए हम एक ढक्कन को जो है काटते हैं यहाँ पे। तो ये हमारा ढक्कन कट के तैयार हो गया है यहाँ पे। और यहाँ पे जो उसकी ऊपर वाली परत निकली हुई है, वहाँ को हम उसको काट के 4 से 5 भागों में आप छोटा छोटा उसको टुकड़े के रूप में काट लीजिए। अब दूसरे वाले ढक्कन में यहाँ मोटर सेट करने के लिए एक हमें छेद करना पड़ेगा, और उसके साइड में भी एक छेद करना पड़ेगा पाइप को लगाने के लिए। तो यहाँ पे देखिए, सबसे पहले हम इसकी पंखी को बनाने के लिए हम पंखी बना लेते हैं यहाँ पे। तो एक अलग से एक छोटा सा ढक्कन लेते हैं। वहाँ पे आप ढक्कन को कहीं भी किसी भी बोतल से या कहीं किसी भी प्लास्टिक से आप काट सकते हैं। अब यहाँ जो हम ग्लू गन की सहायता से हम इसको चिपका देते हैं यहाँ पे। My appetite, don't leave me here high and dry. Oh, well, I don't wanna jinx it, baby, and twist myself at the spine. Don't wanna overthink it, baby, it's just twist your body and mine. But my appetite, don't leave me here high and dry. Oh, but I don't wanna jinx it, baby. Let's not get ahead of my time. Oh, but I don't wanna miss you, baby. So I stand up and speak just my mind. You're chilling in the rain. You're some kind of butterfly. Baby, you give me midnight. You whip up my appetite.